مسئلہ ہے تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے فارن افیئرس اور پی ایم سیکریٹری کے ساتھ جتنا جلدی ہو سکے لوگ ہیں اور کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو چائنا جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. شیخ فیاض الدین صاحب. جناب اسپیکر، اسمبلی کی ویرانی دیکھ کے غالب کا شعر یاد آ گیا ہے، چلیں پھر کس وقت سناؤں گا. تو یہ انہوں نے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، ایک ویرانی سی ویرانی ہے، اسمبلی کو دیکھ کے دشت یاد آیا. سر نے لکھا ہے کہ 8.9 ملین سمندر پاکستانی ہیں اور 11.85 ملین جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. یہ دونوں ملا کے 19 ملین ہوتے ہیں. یہ 19 ملین ہے یا یہ 8 ملین 11 ملین میں شامل ہے؟ سر جی جس طرح معزز ممبر نے کہا کہ واقعی جو ادھر لوگ مقیم ہیں وہ جو ہے نا باہر جا چکے یہ ان کی رجسٹریشن ہے. یہ جو 11.85 جو ہے نا یہ ان کی رجسٹریشن ہو چکی ہے. جا چکے ہیں اور واپس لاسٹ سپلیمنٹری صابر حسین قائم خانی صاحب. سر پہلے تو میں آپ سے کوئی عرض کروں گا کہ ڈالتے ہوئے بھی یہاں پہ ڈسکشن میں چیزیں رہتی ہیں. اگر یہ آپ اجازت دیں اور سینئر ممبر نے بتایا ہے کہ یہ رہا بھی روایت بھی رہی ہے حال کی تو بڑا اچھا ہو جائے گا. عوام کے چاہوں گا کہ یہ جو سمندر پاکستانی 11.85 ملین رجسٹرڈ کیے ہیں تو یہ اب تک وہاں موجود ہیں. جیسے وہ کچھ لوگ واپس آتے ہیں کچھ چلے جاتے ہیں. تو جناب اسپیکر صاحب اس میں مختلف قسم کے وہ دیے گئے ہیں جس طرح 1971 سے لے کر 2010 تک 2,27,000 اس سمتھ کچھ لوگ جو ہے نا باہر مطلب ان کے رجسٹریشن ہو چکے. اسی طرح پھر 2011 میں اس کے اپنی فگر ہے 12 کے اپنی فگر ہے. سابق بھائی سے بیٹھ کے اس پہ انشاءاللہ ہم مطلب ہے کہ ان کو بھی جتنا مطلب انفارمیشن دے سکتے ہیں انشاءاللہ دیں گے. اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے انشاءاللہ. Question hour is over. Leave applications. Leave applications کے بعد جناب کو leave application Syed Mubin Ahmed has requested for the grant of leave for 9th and 10th May 2022. Is leave granted? Granted. Mr. Ghaus Bakhsh Khan Meher has requested for the grant of leave for 12th and 13th May 2022. Is leave granted? Mr. Nasir Iqbal Bosal has requested for the grant of leave for 12th and 17th May 2022. Is leave granted? For the grant of leave for 9th and 12th May 2022. Is leave granted? Granted. Ms. Zubaida Jalal has requested for the grant of leave for the whole current session. Professor Dr. Shahnaz Bloch has requested for the grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Mr. Saad Wasim has requested for the grant of leave has requested for the grant of leave for 12th and 13th May 2022. Is leave granted?
granted, granted. Sayyid Imran Ahmad Shah has requested for the grant of leave from 12th May 2022. Granted. जनाब असलम बोतानी साहब, मोहतरम असलम बोतानी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो बलूचिस्तान में बिजली के बहरान की तरफ दिलाऊंगा। इस वक्त बलूचिस्तान में 18 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है और मेरा जो हल्का है गवादर दसपेला, उसका तो आप हाल ही में पहुंचे। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान की सरजमीन पर इस वक्त 2000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है। कुछ पावर हो, कोस्टल हो या हब हो, जो कि मेरे ज़िले में दसपेला में है। लेकिन बलूचिस्तान की ज़रूरियात जो है वो अगर ये हमें बिजली दे दें, तीनों पावर हाउसेस तो पूरी होती हैं। लेकिन जुल्म ये है कि 18-19 मेगावाट की ज़रूरत है और इस वक्त 400-500 मिल रही है, तो आप अंदाज़ा करें कि क्या पोजीशन होगी लोगों की, ज़मींदारों की। अच्छा, बलूचिस्तान में 3 तरफ से बिजली आ रही है। एक तो नेशनल ग्रिड से आ रही है, एक कराची इलेक्ट्रिक से आ रही है जो दसपेला को सप्लाई करता है। ज़मींदारों का लसबेला में ये हाल है कि 2 घंटे उनको बिजली मिलती है। हमारे साहिली जो इलाके हैं वहाँ सोलर काम नहीं करते हैं। अगर सोलर काम करते हैं तो यकीनन हम उनको सोलर लेके देते हैं। बादल अक्सर होते हैं विंदर में या उथल में, तो इस एरिया में ज़मींदारों को बहुत प्रॉब्लम है। 2 घंटे की बिजली में आप बताएं काश्तकार क्या करेंगे। स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो में बगैर बोलना बेकार है। स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो होनी चाहिए ताकि इस अहम मसला है। तो मेरी गुजारिश है कि बलूचिस्तान वसाइल से माला माल है, पूरे मुल्क को जो है मुस्तफ़ीद कर रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग आज की बदहाली में हैं, चाहे गैस हो, चाहे बिजली हो, चाहे कोई और चीज़ हो। तो मेहरबानी करके आप मुतलका वज़ीर साहब तो पता नहीं इधर हैं या नहीं, आप एक तो नेशनल ग्रिड से बिजली बढ़वाएँ, दूसरा ये कि गवादर में बिजली का फौरी इंतजाम हो। मैंने एहसन इकबाल साहब से भी कहा, शायद 17 तारीख को उनका विज़िट है गवादर का। जब तक वहाँ पावर हाउस नहीं लगेगा, नेशनल ग्रिड से मकान कनेक्ट नहीं होगा, बिजली का इशू रहेगा। कराची इलेक्ट्रिक को हिदायत करें कि वो ज़मींदारों पे रहम करें, दसपेला के ज़मींदारों पे, और उनकी जो भी काश्तकारी है वो मुतासिर न हो। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ये मैं आपके तवस्सुत से हाउस के रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। मिस्टर पार से जो है वो बात करें और इनकी तसल्ली कराएं कि इसका क्या हल होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये हमारे जो मौजूद मेंबर हैं पॉइंट्स रेज किए हैं वो मिस्टर पावर को रिसीव कन्वे भी किए जाएंगे और जवाब भी इनको दिया जाएगा। मेहरबानी। Sayyid Agha Rafiullah to move item number 3, calling attention to this. Khwaja Muhammad Asif. Shahida Rahmani Sahiba. Shahida Rahmani Sahiba, move करें। वज़ीर बराए दिफा की तवज्जो जो है अवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाले अवामी अहमियत के मामला है, जो कि बोर्ड के जो इलेक्शन उन्हें किसी भी किस्म का कोई एजाज़िया या तनख्वाहें नहीं दी जा रही। तो वो क्यों नहीं दी जा रही? मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स
कंटोनमेंट्स के इलेक्शंस हैं ये 1924 के एक्ट के तहत हैं और उसमें जो दोबारा जिसके तहत जो कौंसलर्स हैं उनकी एजाज़िये की और तनख्वाहों की बात की गई है, लेकिन वो रूल्स लाए नहीं किए हैं और अभी तक वो पेंडिंग है। इस वक्त जो ये कंटोनमेंट एक्ट के मुताबिक जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो कौंसलर्स हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स के, उनके हवाले से कोई प्रोविजन ऐसी नहीं है कि उनको एजाज़िया दिया जाए, अलाउंसेस दिए जाए। तो ये अगर इस हवाले से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान इसके हवाले से कोई आइन साजी करना चाहते हैं, उसमें जब तक उस एक्ट में प्रोविजन नहीं होगी शाहिदा रहमानी साहब। कर दी जाए ताकि काउंसलर्स को जो है इस महंगाई के दौर में उनको कुछ तो एजाज़िया मिले जो वो भाग दौड़ करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब जो ऑनरेबल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। आपके सामने और हाउस के सामने दो पॉलिसी स्टेटमेंट्स देना चाह रहा हूँ। एक अपना फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से और उसके बाद मैं अपना जो पहले पॉलिसी स्टेटमेंट देने वाला हूँ, इट इज़ अबाउट दी ये हमारा चार्ज संभालते हुए जो सबसे पहले इशू है जिसका हमें मुकाबला करना पड़ा, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से मैं आपको वो सुनाता हूँ। Mr. Speaker, I rise today to bring to the notice of this August House yet another concerning development in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The honourable members would recall that on 5th August 2019, India announced a series of illegal and unilateral measures in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. These steps were aimed at changing the internationally recognized disputed status of Jammu and Kashmir and altering the demographic structure of the occupied territory. These illegal and unilateral Indian measures were completely rejected by the people of Kashmir on both sides of the LOC. India has since been relentlessly pursuing its sinister design of demographic change, including through measures such as issuance of millions of domicile certificates to non-Kashmiris and allowing non-Kashmiris to buy property in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. In the same context, the so-called commission established by the Indian occupiers in March 2020 to delimit constituencies in IIOJK has rendered a report that has confirmed the worst fears of the people of occupied Jammu and Kashmir. This report is a further manifestation of the Indian government's repugnant plan to disempower and disenfranchise the Kashmiris and turn them into a minority in their own land, blatantly disregarding the universally accepted criteria of taking population as the fundamental basis for delimitation and defying all democratic norms. The Indian government has attempted outrageous gerrymandering. Consequently, the electoral balance has been artificially tilted in favor of Jammu, a non-Muslim majority area having 43.7% of the total population according to the census of 2011, as opposed to Kashmir with a majority Muslim population and having around 56% of the total population of the occupied territory. This attests to India's ulterior motive vis-a-vis IIOJK. In a glaringly injudicious distribution
Despite Kashmir making up the bigger portion of the overall Indian illegally occupied Jammu and Kashmir population, only one seat has been proposed for it by the Commission under the illegal Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019, as opposed to 6 additional seats for Jammu. The redrawn electoral boundaries are blatantly skewed in favor of the non-Muslim dominated constituencies in the IOJK and have already been rejected by the cross-section of political parties of the occupied territories. Mr. Speaker, these measures are a blatant attempt to help the BJP electoral and political objectives in IIOJK and to make permanent the illegal and unilateral measures of August 5th, 2019. We believe that the whole exercise is illegal and controversial of the relevant UN Secretary Council resolution, international law, and the 4th Geneva Convention, which imposes certain obligation on occupying forces, including not to change the democratic structure of occupied territories. The government of Pakistan has categorically rejected the report of the Demolition Commission and termed it a farcical exercise. A strong démarche was made to the Indian Chargé d'Affaires, who was summoned to the Ministry of Foreign Affairs. I have designed to further marginalize and divide the Kashmiri people and pave way for yet another puppet government that panders to Hindutva ideology. Going forward, we will continue to reach out to the world community to raise international awareness about India's illegal action and mobilize the requisite response. Our special focus is on the United Nations, the OIC, and key multilateral forums. I call upon this august House to reinforce our efforts by adopting a draft illegal occupation in IIOJK through the Delimitation Commission and artificially alter the electoral balance in favor of a Hindu minority. I also take this opportunity to reaffirm in the most unequivocal terms the commitment of the government and people of Pakistan to extend all possible support to the Kashmiri people till they achieve their legitimate right to self-determination enshrined in the UN Security Council resolutions. The resolution as signed is as follows, Mr. Speaker. The National Assembly of Pakistan, recalling the resolution of 6th August 2019, adopted unanimously by Parliament of Pakistan and subsequent resolutions rejecting India's illegal, unilateral, reckless and coercive actions aimed at altering the internationally recognized disputed status of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, deeply alarmed at the situation in IIOJK arising out of the continued Indian occupation in violation of international law and UN Security Council resolutions, expressing grave concern over the series of illegal measures that the Indian occupation forces have been taking to change the demographic composition of the occupied territories in stark violation of international law, particularly the 4th Geneva Convention and the relevant resolutions of the UN Security Council, denouncing the latest attempt at demographic engineering in IIOJK through a so-called Delimitation Commission constituted in March 2020 in the occupied territory aimed at artificially altering the electoral strength of the Muslim majority. Noting that the Commission's recommendations have been rejected by a cross-section of political parties in IIOJK, reaffirming Pakistan's complete support and solidarity with the Kashmiri people, rejects categorically the report that the so-called Delimitation Commission that seeks to convert the Muslim majority of IIOJK into a minority and further marginalize, disenfranchise, disempower the Kashmiri population
of IIOJK and advance the political and electoral objectives of the BJP. Expresses grave concern that through the delimitation exercise, India is making an attempt to further its illegal actions of 5th August 2019 and subsequent measures, all of which have been categorically rejected by the people of Kashmir and the people of Pakistan. He recalls and reaffirms that Jammu and Kashmir is an internationally recognized dispute and a long-standing item on the agenda of the UN Security Council, declares that no facade elections based on a sham delimitation exercise can substitute the legitimacy and indispensability of a free and impartial plebiscite held under the auspices of the United Nations to enable the Kashmiri people to exercise their right to self-determination in accordance with the relevant UNSC resolution. We demand that India honors and fulfills its obligations under international law, UNSC resolutions, and the 4th Geneva Convention to refrain from bringing about any illegal demographic changes in the occupied territory, urges the Indian government to forthwith end its oppression and widespread violation of human rights and international humanitarian law in IIOJK and enable the Kashmiri people to exercise their inalienable right to self-determination as enshrined in the relevant UNSC resolutions. Calls upon the international community to ensure accountability of India's grave and persistent violations of human rights and war crimes in IIOJK, and to urge India, the occupying power, to immediately halt and reverse any unilateral and all illegal actions in IIOJK and to fulfill its obligations under the relevant UNSC resolution. Reiterates the unflinching commitment and solidarity of Pakistan and the Pakistani people with our Kashmiri brothers and sisters, and reaffirms that Pakistan will continue to extend all possible support in their just struggle for freedom and self-determination, and requests the government to continue to expose and counter the Indian moves before the international community to highlight and forcefully project the Kashmir cause at all bilateral, multilateral fora, including the United Nations and the OIC. I request for this resolution to be passed by the House. Mr. Ramesh Kumar.